हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड एंड आपकी नवंबर की तैयारी जोरों शोरों से चल रही होगी। सो क्विकली जॉइन इन। आज हमें स्टार्ट करना है रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल के Q&A, बेसिकली ऑडिट के सवाल। चलिए, सो आ जाइए, क्विकली जॉइन इन सो दैट वी कैन स्टार्ट विद द सेशन टुडे। यस, हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बाय द वे ऑडिट सार में से ये चैप्टर कर लिया है, दैट इज रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल्स। आज हमें ऑडिट सार के बाद ऑडिट के सवाल में से, दैट इज अ क्वेश्चन बैंक, ऑडिट के सवाल में से ये चैप्टर के Q&A देखने हैं सो दैट यू आर thoroughly prepared that what kind of questions are asked from this chapters। ठीक है। एंड हाँ जी बच्चों, एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट दैट द प्लस बैच विद रिस्पेक्ट टू May 21 एंड November 2020 तो ऑलरेडी शुरू होकर के समाप्त हो चुका है। सक्सेस शॉर्ट बैच एंड सक्सेस लैडर बैच, ये दोनों ही बैच भी आपके लिए बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट है। सो आई रियली अर्ज यू ऑल, एक बार आप अनअकैडमी का प्लस बैच, एक बार अनअकैडमी का प्लस बैच एक्सपीरियंस कीजिए। आई एम श्योर this plus batch की journey will never be like, you will never forget this। ठीक है, that systematic plan of studies, that quiz round, that competition of student, that live lecture, that live interaction, you will thoroughly enjoy। nothing like, मैं ये नहीं कह रही हूँ सिर्फ enjoyment है, with enjoyment the level of knowledge which you get from the educators is ultimate। So this is a small way from our side। If at all you apply my code, that is Audit SAR, you will immediately get 10% discount on any of the batches which you try availing, be it 6 months course, be it a year course, be it 2 years course, या फिर CA Intermediate हो या फाइनल, CA कैटेगरी ना हो करके कॉलेज सेक्शन हो, फाउंडेशन हो या 11th-12th, anywhere I will be standing with you all with my code Audit SAR। So do apply that code and let us also enjoy your journey of education। Hello Bhushan, Priya, Lavi, very good evening। Namaste everyone। Yes Bhushan, namaste। So चलिए, आज का लेक्चर यहाँ पे, आज के सेशन में बेसिकली Q&A देखना है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं विद क्वेश्चन एंड आंसर राउंड। बोलो श्री अम्बे मात की जय। Lavi, Pavan, Priya, Bhushan, please inform in the groups that yes, we are live and we are solving Q&A। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन, yes Sakshi, please post the message in the group that we are live so that maximum students can join us in। yes, okay। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए, आपके सामने ये रहा। As a part of risk assessment, the auditor shall determine whether any of the risks identified are, in auditor's judgment, significant। In exercising judgment as to whether the risks are significant, what factors he should keep and consider। Explain this in contest with essay 315। बताइए बच्चों क्या लिखेंगे? रिस्क असेसमेंट, जब देखो फ्रैंकली स्पीकिंग हम क्या करते हैं, रिस्क को असेस करते हैं। रिस्क को असेस करते समय हम जज करते हैं कौन से सिग्निफिकेंट रिस्क है। ये देखो, आइडेंटिफाई सिग्निफिकेंट रिस्क, एंड ये सिग्निफिकेंट रिस्क को आइडेंटिफाई करते समय हमको जजमेंट अप्लाई करना होता है। ठीक है, सो ये जजमेंट के लिए हम लोग कौन से फैक्टर्स विल बी कंसिडर्ड बाय अस, ये बताइए। बताइए सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए कौन से फैक्टर्स?
यस, ये वाला क्वेश्चन बच्चों हम लोग ने सिग्निफिकेंट रिस्क के रिगार्ड्स में ऑलरेडी पढ़ लिया है। सो यहाँ पे देखिए, कुछ याद आ रहा है? सिग्निफिकेंट रिस्क के लिए द ऑडिटर शैल कंसिडर द रिस्क ऑफ फ्रॉड, significant changes, regularity involving significant transactions। ये कहाँ पढ़ा था बच्चों, आपको कहीं पे याद है? ये हम लोगों ने एकदम ही एंड में, जहाँ पे मैंने आपको जस्ट लास्ट क्लास में एकदम ही अंतिम समय था हमारे लेक्चर वाइंड अप करते समय, मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाया था, याद आ रहा है? सार भी एक साथ साथ खुला रख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे, so that you can very well correlate। कहाँ गया बच्चों, कौन से पेज नंबर पे था? कैन एनीवन लेट मी नो व्हाट इज द पेज नंबर ऑडिट्स आर? ओरे आईसीआई नहीं है बच्चों इसका आंसर, ऐसा कैसन ये रहा। The auditor should consider the following factors, ये देखिए, risks are significant, fraud, complexity, unusual transaction, subjectivity, risk। याद आया? पक्का? चलिए फिर से चले जाए क्वेश्चन आंसर्स में। यस, ये देखिए, रेगुलरिटी, कॉम्प्लेक्सिटी, सब्जेक्टिविटी, मेजरमेंट अनसर्टेनिटी, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस, ये सारा ही रिस्क फैक्टर्स है। याद आया? यस शालिनी, यस, प्राउड ऑफ यू, वेरी नाइस। नेक्स्ट, सेकेंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिस्कस what is included in risk assessment procedures to obtain evidences about the design and implementation of relevant controls। risk assessment procedures में क्या आएगा? very good evening बलराम जी। yes, risk assessment procedures में क्या क्या चीजें आएगी बताइए। yes, ओरे आईसीआई, किसने आंसर दिया है? ओरे आईसीआई, yes, very nice, this is ओरे आई, सी नहीं आता है, ए आई। ओ इज ऑब्जर्वेशन, री परफॉर्मेंस रिकम्पिटेशन नहीं, रे इज रिलेटेड एक्टिविटीज, इंस्पेक्शन, इंक्वायरीज, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आंसर देख लेते हैं। यस, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में क्या चीजें आती है? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स में आती है इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड ट्रेसिंग द इंफॉर्मेशन। ओरे आईसीएआई वाली बातें है। वेरी नाइस साक्षी, पवन, हाँ जी। नेक्स्ट, अ सैटिस्फैक्टरी कंट्रोल एनवायरनमेंट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डेटरेंट टू फ्रॉड, दो इट हेल्प्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ फ्रॉड। एक्सप्लेन, क्या एक्सप्लेन करेंगे? बोलिए, क्या एक्सप्लेन करेंगे कि एब्सोल्यूट हम ये बोल सकते हैं कि कंट्रोल एनवायरनमेंट है बट फिर भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो फ्रॉड है, ये देखो यहाँ पे, जो फ्रॉड है वो कल्यूजन के मारे हो सकता है। जो फ्रॉड है वो इस प्रकार से हो सकता है कि जहाँ पे हम आईटी सिक्योरिटी ना हो, जहाँ पे सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ फ्रॉड हो जाए। तो ऑल इन ऑल कंट्रोल्स मजबूत होने से ये नहीं कह सकते कि फ्रॉड होगा ही नहीं। सो satisfactory control environment is not an absolute deterrent to fraud. How come? The existence of satisfactory control environment can be a positive factor। मतलब भरोसा होगा कि रिस्क कम है, बट 100% की श्योरिटी नहीं है कि रिस्क ही नहीं होगा। Conversely, deficiency in controls may undermine the effectiveness of controls। Basically, जहाँ पे controls weak है, ये एक शॉर्ट चांस है, बिकॉज कंट्रोल वीक है तो फ्रॉड हो ही सकता है। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, मैनेजमेंट फेलियर टू कमिट सफिशिएंट रिसोर्सेज टू एड्रेस आईटी सिक्योरिटी। आईटी सिक्योरिटी ढंग का
नहीं है, अगर आईटी सिक्योरिटी ढंग का नहीं है तो बॉस फ्रॉड तो होगा ही। ठीक है, तो दो तरीके से इन्होंने बात बताई है। देखो, अगर कंट्रोल सही हुए तो ऐसा जरूरी नहीं है फ्रॉड नहीं होगा, बट हाँ कंट्रोल वीक हुए तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में रिस्क बढ़ जाएगा ऑफ फ्रॉड। समझा? पक्का? श्योर? यस। So, the control environment in itself does not prevent, detect or correct the misstatement. It may, however, influence the auditor's evaluation. ऑडिटर को ये दिलासा देगा या भरोसा दिलाएगा कि यार रिस्क कितना हो सकता है, ज्यादा या कम। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बी। The auditor of XYZ Limited engaged in FMCG, fast moving consumers good, as obtained as the understanding of control environment. Apart from this understanding, the auditor evaluates A. Management has created and maintained a culture of honesty and behavior, and the strength in the control elements collectively provide appropriate foundations. Advise what is included in control environment. Also explain the element of control environment. क्या लिखेंगे? Very nice, साक्षी. Yes, yes. जल्दी बताओ बच्चों, क्या लिखेंगे इसमें? पूरा क्रिज्म लिखेंगे? हाँ जी, पूरा क्रिज्म लिखेंगे या क्रिज्म का खाली फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे? यस, CRICM, कंट्रोल एनवायरनमेंट रिस्क असेसमेंट। तो इसमें क्या क्या लिखेंगे? जल्दी बोलो बच्चों, गला सूख रहा है। यस यस, वेरी नाइस, वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे शालिनी वेरी गुड। हम लोग यहाँ पे क्रिज्म का सिर्फ सी वाला पॉइंट लिखेंगे, CRICM, इसमें से सिर्फ ये। ठीक है, कंट्रोल एनवायरनमेंट एंड इसके कंपोनेंट, बेसिकली यू अंडरस्टैंड एंड इवैल्यूएट। देखो, ये तो हम लोग करते ही है, इसके साथ साथ यस हम लोग ये भी देखते हैं कि मैनेजमेंट का गवर्नेंस, एटीट्यूड्स, TCWG, ऑर्गेनाइजेशन में इन्फ्लुएंस किसका कितना है, एनफोर्समेंट इंटीग्रिटी, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, पार्टिसिपेशन ऑफ TCWG, philosophy and style of operating, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये हम लोग ने क्रिज्म वाले पॉइंट में देखा था बच्चों। ये देखो, यस, A से G वाला पॉइंट, ये बात याद आया है? सिर्फ कंट्रोल एनवायरनमेंट। मैंने आपको तभी भी बोला था ये रिटेल क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। डन डन डन। यस, साक्षी, शालिनी, वेरी गुड। फिर से क्वेश्चन माइंड में चले जाते हैं। अभी रुको बच्चों, ये बड़े वाले क्वेश्चन मैं थोड़े समय बाद लेती हूँ, एक आध दो क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। अभी मुझे ना डायरेक्टली आना है आपके साथ करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन देखने के लिए। यस, चलो रेडी? करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए हाँ जी, करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए थोड़े क्विक रिस्पॉन्स के लिए बच्चों बहुत ही लेथार्जिक मत हो जाइए, बिकॉज ये टेस्ट में भी मुझे रिटर्न क्वेश्चन तो पूछने ही आपसे। करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन और MCQ क्वेश्चन पे फोकस रखते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। रेडी स्टडी, बोलो श्री अम्बे माता की। ऐसे वाला यस। चलो सबसे पहला क्वेश्चन करेक्ट इनकरेक्ट का, फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट है ये,
एंड हाँ जी बच्चों, ऑल्सो आई एम प्लानिंग टू टेक अप योर मिंटी क्विज, सो प्लीज लेट मी नो व्हाट आर योर ओपिनियंस टुवर्ड्स दैट क्विज, so that from tomorrow's class we can also have last 15-20 minutes में मिंटी क्विज. ठीक है, फटाफट फटाफट एमसीक्यू क्वेश्चन, फटाफट फटाफट करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, यस, ओके. As per section 138 of Companies Act, the private companies are not required to appoint internal auditor. Correct or incorrect? बोलिए करेक्ट और इनकरेक्ट. सबसे पहला आंसर आ चुका है हमारे पास, धड़ाधड़ मैसेजेस आ रहे हैं. इनकरेक्ट. किसी ने भी रीजन नहीं बताया है बच्चों, बहुत ही गलत हो रहा है. आप लोगों ने पूरे गेम के रूल्स भूल गए हो. आप गेम के रूल्स इस प्रकार है, करेक्ट इनकरेक्ट रीजन के बिना नहीं चलेगा, नहीं चलेगा. रीजन का है यस, दिस इज अ प्राइवेट कंपनी एंड प्राइवेट कंपनी में रिक्वायरमेंट है दीपिका पादुकोण भंसाली टीम. Deposits, paid up share capital, borrowings and turnover. ठीक है, yes, okay. Second, there is a direct relationship between materiality and the degree of audit risk. आखिर रिश्ता क्या है इन दोनों का, materiality and audit risk का? Neelam, very nice. Yes, this is incorrect. क्योंकि यहाँ पे इनवर्स रिलेशनशिप आता है. कैसे इनवर्स? कैन एनीवन make me aware how the relation of materiality and audit risk is inverse? Yes, Lavi, Pavan. Yes, जितनी ज्यादा मटेरियलिटी उतना ज्यादा आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करेंगे. जितना ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे उतना कम रिस्क होगा. Risk of expressing inappropriate audit opinion. Hence, there is inverse relationship between materiality and audit risk. समझा है? पक्का? Yes. Okay. Next. Yes. Control risk is a susceptibility of account balances or class of transaction to material misstatement that could be material either individually or in aggregate, assuming that there were no controls. Ma'am, in private company only BT. हाँ, yes. In private company only BT बराबर है. Yes, Vaibhav, yes.
Yes. Yes, this statement is also incorrect. क्यों ये इनकरेक्ट है? क्योंकि ये कंट्रोल रिस्क ना हो करके इनहेरेंट रिस्क है। ठीक है? नेक्स्ट, test of controls are performed to obtain audit evidences about the effectiveness of internal control system. Test of controls are actually performed in order to obtain audit evidences about effectiveness of internal control system. Question number 4. People, I would rather request you all to give your answers along with question number. Question number 4 आगे करके जो भी करेक्ट है इनकरेक्ट है वैसा लिखें, क्योंकि आप थोड़ा बहुत आगे पीछे देख रहे हो तो सारे क्वेश्चंस मिक्स हो रहे बच्चों। यस, क्वेश्चन नंबर 4 करेक्ट। करेक्ट लोग कह रहे हैं करेक्ट। ऐसा कैसन? इज इट? प्रिया कह रही है करेक्ट। लावी कह रही है नहीं समझा। लावी जस्ट अ मिनट, हम समझाते हैं आपको। शालिनी इज टेलिंग मी दिस इज इनकरेक्ट। सिर्फ शालिनी का आंसर आया है आईसी। साक्षी ने भी क्या आंसर दिया? साक्षी ने भी कहा है करेक्ट। नीलम, वैभव, सूरज, पवन, बोलिए क्वेश्चन क्या कहता है समझो। वो कहता है टीओसी, ऑडिटर टीओसी अप्लाई करता है, मतलब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स अप्लाई करता है। लावी समझेगा, क्योंकि उसको एविडेंसेस इकट्ठा करने हैं। तो ऑडिटर हर बार प्रोसीजर्स एविडेंस इकट्ठा करने के लिए ही करता है, इतना समझ लीजिए। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स आर परफॉर्म इन ऑर्डर टू ऑब्टेन एविडेंसेस, इतना तो सही है, अबाउट द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। बलराम जी भी कह रहे हैं इट इज इनकरेक्ट एंड द राइट आंसर इज इट इज करेक्ट। वाई? क्योंकि हम लोग लिटरली स्पीकिंग टीओसी इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल्स के बारे में ही करते हैं। देखो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल्स। सो हम लोग टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स क्यों करते हैं, टीओसी क्यों करते हैं? इन ऑर्डर टू फाइंड आउट आईसी इज इक्वल्स टू ई टू सी। समझ में आता है? IC is equals to E to C. Making sense? पक्का? Sure? Done, done, done. So यहाँ पे भी it is IC is equals to E to C. यहाँ पे भी effectiveness ही है, किसको efficiency दिख रहा है? बच्चा it is effectiveness only. IC is equals to E to C. Existence, effectiveness and continuity. पर मैम सिर्फ effectiveness लिखा है। नहीं शालिनी, whenever it is written that TOC is in regards to check effectiveness of internal control. Now effectiveness is operating effectiveness, कि वो चल ढंग से रहा है। ठीक है? So this is the element. तो यहाँ पे the statement holds true. So your answer is incorrect. The statement is basically which is provided is correct. समझा है? Done? चलो एक बार इसको हाईलाइट करके इंपॉर्टेंट मार्क कीजिए।
यस, हाईलाइट दिस, मार्क इट इम्पोर्टेंट, क्योंकि काफी जनों को कंफ्यूजन हुआ है इसमें. यस, आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ रहे हैं. एवरीवन पिट पैड रेडी. क्वेश्चन नंबर 5. Maintenance of internal control system is a responsibility of statutory auditor. Maintenance is a responsibility of statutory auditor. Yes, नीलम ने पहले ही राउंड में मारा है चौका. Yes, नीलम, प्रिया, Lavi, very, very, very good. This statement is इनकरेक्ट. ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि देखो, कभी भी इंटरनल कंट्रोल के बारे में बात आए, इंटरनल कंट्रोल के लिए जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इज ऑफ मैनेजमेंट एंड ना कि ऑफ ऑडिटर्स. ये मैंने पा माफी में पढ़ाया था, आपको याद है? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में पा माफी, पा माफी याद आ रहा है? पा माफी का आई वॉज इंटरनल कंट्रोल. ठीक है, तो यहाँ पे इसकी जगह पे आना चाहिए इसकी जगह पे आना चाहिए मैनेजमेंट. समझा है? पक्का? श्योर. मैनेजमेंट एंड TCW. जी, वेरी नाइस वैभव. क्वेश्चन नंबर 5 क्लियर है. क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6 कहता है yes, few members of board of directors opposed to the appointment of Mr. N, an employee of the company, as internal auditor, stating Mr. N is not a chartered accountant. Further, he is an employee of the company, so he cannot be appointed as internal auditor. Correct or incorrect? Sonu is in the class. Very good evening, Sonu. Sonu कह रहा है question number 6 is incorrect. But you don't forget to motivate us by liking the video, by subscribing to the channel, and by commenting below that how these efforts are adding knowledge या फिर are helping you all in your preparations. बोलिए, is this correct or incorrect? अरे मेरा स्टेटमेंट नहीं, ये क्वेश्चन नंबर 6. हाँ जी, लोग कह रहे हैं इनकरेक्ट. इनकरेक्ट इनकरेक्ट क्यों? अरे वो ऑडिटर बनने के लिए एम्प्लॉय थोड़ी चलेगा, करेक्ट होना चाहिए. राइट. नीलम, दावी, साक्षी, लक्ष्मी, सोनू, यस, दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. काहे ये इनकरेक्ट है? काहे ये इनकरेक्ट इसके लिए है क्योंकि 138 कहता है कि बीट अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीट अ कॉस्ट अकाउंटेंट और बीट एनी अदर प्रोफेशनल एज द मैनेजमेंट डीम्स फिट, ये बंदा इंटरनल ऑडिटर बन सकता है. ये एम्प्लॉई भी हो सकता है, एम्प्लॉई नहीं भी हो सकता है, वॉट एवर द केस में भी. So he can be CA or CMA, whether in practice or not, or any other profession. ठीक है? Yes. Employee, even employee will be okay. ठीक है. Okay, Balram ji, a small change in your answer, as I'm seeing that what have you written is even employee as well as any professional body. It is not any professional body. Professional qualification. Professional body is
is something wherein you are pinpointing an artificial entity, which is not the case. Professional body is not pinpointing an a natural person. Professional body is an institute entity like that. ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे be it a chartered accountant, be it a cost accountant, or any other professional person as a management deems fit. Employee can be satisfactory control are absolute deterrent to fraud. अरे भैया क्या कह रहे हो? क्वेश्चन नंबर 7, चलो बच्चों लोग पिट पैट रेडी. क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? बलराम जी फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में है. बलराम जी ने क्वेश्चन नंबर 6 टाइप करके रखा था 7 and he was just waiting me to read out the answer question and hada enter. Yes, it can reduce the risk but it cannot mitigate it to zero. The statement is incorrect. Yes, समझा है पक्का? ये अभी अभी मैंने ऊपर अभी क्वेश्चन के टाइम पे समझाया. करेक्ट, इट गिव्स रिजर्वेशन है. करेक्ट कैसे आया? 7th वाला करेक्ट कैसे आया? अच्छा हाँ, इट इज नॉट, तो यहीं पे लिखा है. राइट, हाँ जी हाँ जी हाँ जी. नॉट इंक्लूडेड है. हाँ 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 यस. तो बेसिकली मैं ऊपर क्वेश्चन से आंसर में आ गए. इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड. हाँ जी बिल्कुल, इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट डिटरेंट टू फ्रॉड. रीजनिंग मैंने वही कहा, इट कैन reduce the risk but it cannot delete the risk. जीरो नहीं हो सकता. ठीक है, अच्छा. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. The auditor's reporting on internal financial control will be applicable in respect to interim financial statements. जो IFC वाला रिपोर्टिंग हम करते हैं वो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए भी करते हैं या नहीं करते? बोलिए. नहीं करते. द स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. आईएफसी पे कभी भी जो रिपोर्टिंग होता है वो हर बार हमेशा से ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए होता है. भूषण ने कहा है इनकरेक्ट इनकरेक्ट इनकरेक्ट. 143. यस यस यस. बट इस पर ना बहुत लंबा चौड़ा मैं आपको रीजनिंग बताने वाली हूँ. ये देखिए, इसका रीजनिंग देखिए. रीजनिंग इटसेल्फ इज ऑफ 3 पैरास. अंडरस्टैंड, देयर इज नोवेयर अंडर 143.3 दे हैव मेंशन्ड अबाउट पीरियड फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसके ऊपर हमको रिपोर्टिंग करना है. फ्रैंकली स्पीकिंग, इट इज अज्यूम दैट इट इज एनुअल. ठीक है, क्योंकि वो 143.3 की रिक्वायरमेंट्स एनुअल फाइनेंशियल्स पे ही है. ठीक है, ये रीजन आई वांट एवरीवन ऑफ यू ऑल टू रीड अलोंग विद मी. ठीक है, समझिए. वो कहता है as per 143.3I Act requires auditor to report on whether the company has adequate internal financial control system in place and the operating effectiveness of such control. मैंने कहा ठीक, इतना तो मैंने भी माना. It may be noted that auditor's reporting on internal financial control is a requirement specified under the Act. ये Act ने बताया है, ये हमारा स्टैंडर्ड नहीं कहता है. And will apply only in case of the reporting of the financial statements which are prepared under the Act. ये हम लोगों ने assume किया है क्योंकि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्ट ने दी है
तो हम वही फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे रिपोर्टिंग देंगे जो एक्ट ने कहे हैं, एंड एक्ट ने हमें एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने को and reported under 143. Accordingly, the reporting on internal financial control will not be applicable with respect to interim financial statements such as quarterly, half-yearly statement unless such reporting is required under any other law. ठीक है, इसका रीजन काफी हद तक इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बच्चे रीजन समझने में भी गलतियां करते हैं. आई होप द क्वेश्चन नंबर 8 का रीजनिंग इज ऑल्सो क्लियर टू यू ऑल. Yes. Yes, ma'am, but it will be the reporting on internal control. It is internal financial control. Highlight the word. Internal financial control. Yes, you just view the question that whether internal financial controls are required to be reported with respect to interim financial statements or not. Interim का मतलब होता है half yearly, quarterly. समझा? पक्का? क्लियर. ओके, चलिए आगे बढ़े. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. चलो एवरीवन पिट पैट रेडी. क्वेश्चन नंबर 9. कंट्रोल रिस्क, नो इंटरनल कंट्रोल्स. ये रिपीटेड क्वेश्चन है. यस, बताइए बच्चों. इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट. प्रिया, ऐसा नहीं चाले. क्वेश्चन आंसर देने के बाद फिर पलटी मार देना. दिस इज इनकरेक्ट. ठीक है. Now, going to the next question, question number 10. As per section 138 of Companies Act, private, अरे repeated question, repeated, ये दोनों ही repeated होते हैं. repeated है ये दोनों. आगे बढ़ते हैं. Question number 11. Everyone, question number 11. गवर्नमेंट कंपनी के रिटर्न टेस्ट रख लीजिए संडे को. शालिनी, बिल्कुल. इस संडे को बेसिकली हमारे जो टेस्ट का शेड्यूल है उस टेस्ट में हम लोग करने वाले हैं आपका रिस्क असेसमेंट वाला चैप्टर एंड बैंक वाला चैप्टर, जितना हो उतना. एंड फॉर श्योर अगर आपने हमारा स्पेशल क्लास देख लिया है या यूट्यूब में ये क्लास देख लिया है ऑफ गवर्नमेंट ऑडिट, तो इस संडे को जितने भी बच्चे तैयार है तो इस संडे को गवर्नमेंट ऑडिट का भी टेस्ट इंक्लूड कर ही लेंगे. ठीक है. Yes, question number 11. Everyone on question number 11, please. Yes, question number 11 कहता है the term internal audit is defined as the checks on day-to-day transaction which operate continuously as a routine system whereby the work of one person. प्रिया, हाँ जी. सोनू कह रहा है 11th is incorrect.
ओके शालिनी, ठीक है बच्चा। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 11, आई विल सून गिव यू द शेड्यूल, बेसिकली शेड्यूल तो दिया हुआ ही है, आई विल सून गिव यू द पोर्शन फॉर द टेस्ट, ठीक है। फिलहाल के लिए क्वेश्चन नंबर 11, फोकस। करेक्ट और इनकरेक्ट? कुछ सारे बच्चों ने आंसर तो दे दिया है, लावी कह रही है इनकरेक्ट। ओके, दिस इज इनकरेक्ट, क्योंकि यहाँ पे आएगा इंटरनल चेक। ये मैंने आपको सिखाया था, जब भी इंटरनल चेक सिखाया था, आई लिटरली इन्फॉर्म यू ऑल कि इंटरनल चेक इज अ routine framework wherein the work of one person is automatically being checked by some other person, and by this routine framework we are able to make sure that there is no flaw in the company's operation. समझ में आता है? पक्का? श्योर? ओके, मार्क दिस एज इम्पोर्टेंट ऑल्सो बच्चों। कौन से कलर से इम्पोर्टेंट मार्क करें? रेड। यस, नेक्स्ट आगे बढ़ते विद क्वेश्चन नंबर 12, एवरीवन पिट पैट रेडी, पे अटेंशन। क्वेश्चन नंबर 12, the assessment of risk is a matter of the capable precise measurement. Lavi, very good, beautifully answered, very nice. Incorrect, incorrect. Incorrect क्यों है भैया ये? Why is this incorrect? Yes, this is a matter of professional judgment and not precise measurement. Very nice. The last question, question number 13. Yes, question number 13. Risk assessment procedures are not performed are not performed to obtain understanding of entity and its environment. Yes, Bhushan, Priya, Vaibhav, Neelam, Pawan, Balramji, Sakshi, Lavi, Shalini, Lakshmi, Sonu, Suraj, Priya. रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स करते हैं या नहीं करते? करेक्ट, करेक्ट। प्रिया कह रही है करेक्ट, पवन कह रहा है करेक्ट, करेक्ट, and the right answer is this statement is incorrect. Basically, risk assessment procedures it refers to understanding risk. Risk assessment procedures में क्या आता है? Observation, inquiries. So basically, you are trying to identify and assess a risk. देखिए, refers to the process performed to understand the entity and its environment.
इंक्लूडिंग द इंटरनल कंट्रोल। ठीक है, द अबाव गिवन स्टेटमेंट इज, मैंने नोट को हाईलाइट भी किया बच्चों, आ गया आंसर। नॉट is something which is making the statement incorrect. The statement is incorrect. समझा? पवन, जिन्होंने भी गलत जवाब दिया था आपको समझा है? नॉट नहीं देखा, कोई दिक्कत नहीं। ओके ओके, डन डन डन, पक्का शॉट। चलिए आगे बढ़े एमसीक्यूज की तरफ। हाँ जी बच्चों, तैयार एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए? सारे ही करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन समझ में आ चुके हैं? Keep up the spirit high. All the very best for पड़ाव 2, राउंड 2 of this session. पड़ाव 2 में क्वेश्चन आंसर्स में फ्रैंकली स्पीकिंग करेक्ट इनकरेक्ट पे मेरा ज़्यादा जोर होता है, एमसीक्यूज पे मेरा ज़्यादा जोर होता है, क्योंकि रिटर्न प्रैक्टिस जो है वो हम लोग कर रहे हैं लाइव वर्चुअल टेस्ट सीरीज में। सो एवरी सैटरडे एंड संडे, बेसिकली ईदर सैटरडे और संडे, आई टेक योर लाइव टेस्ट, जहाँ पे आप राइटिंग प्रैक्टिस करके आपकी जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस है ना उसकी प्रैक्टिस सुधार सकते हो। ठीक है, सो फ्रैंकली स्पीकिंग मेरा टोटल फोकस इज ऑन दिस 44 marks. What is 44 marks? I'll tell you. 30 marks MCQ and 14 marks correct incorrect, summing up to 44 marks. So ये 44 marks का हमारा टोटल 30 marks MCQ, 14 marks CIC, टोटल 44 marks पे है हमारा टारगेट। ठीक है, सो चलिए कल क्या होने वाला है? कल बैंक ऑडिट शुरू होने वाला है बच्चों। यस बिल्कुल। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, ऑडिट रिस्क इज अ फंक्शन ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड डैश। जल्दी फटाफट, डिटेक्शन रिस्क, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, बिजनेस रिस्क। यस वैभव, सोनू, वेरी नाइस। इन लोगों को मैंने एक बार बोला कि बच्चों क्वेश्चन के साथ आंसर स्टिक कीजिए। नाउ एवरीवन इज रिमेंबरिंग इट, अप्रिशिएटेड, वेरी नाइस। यस द राइट आंसर इज डिटेक्शन रिस्क। हम लोगों ने पहले बात करके रखा था AR इज इक्वल्स टू RMM इंटू DR, RMM इज इक्वल्स टू IR इंटू CR and yeah as it is into DR, hence AR is equals to डन, पक्का। नेक्स्ट ये लल्लू क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2, फोकस फोकस फोकस। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर अ गिवन लेवल ऑफ ऑडिट रिस्क द एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ डिटेक्शन रिस्क bears dash relationship between the assessed risk of material misstatement and at assertion level. Direct, inverse, no relation, none of the above. क्वेश्चन नंबर 2, डायरेक्ट रिलेशन नहीं आएगा, टू बी एंड द राइट आंसर इज इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। जितना कम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उतना कम आप ऑडिट प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे। फ्रैंकली स्पीकिंग 3-2 ये क्या लिखा आपने? लक्ष्मी आई गेस आप नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चली गई। हमारा ये क्वेश्चन का डिस्कशन चल रहा था, जितना कम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट उतने कम प्रोसीजर्स आप अप्लाई करोगे उतना ज्यादा डिटेक्शन रिस्क है, उसकी वजह से ऑडिट रिस्क ज्यादा, तो इट इज इनवर्स रिलेशनशिप। ठीक है, नेक्स्ट इज ओके, यहाँ वाला आंसर लिख दिया। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हैज हाउ मेनी कंपोनेंट्स? 3, 2, 4, 1, 2, 3, 4।
बताइए। क्वेश्चन नंबर 3 बी, क्वेश्चन नंबर 3 2। ये वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम बच्चे मार्क खाते हैं। मैक्सिमम बच्चों को लगता है कि 3 एज एन आंसर आना चाहिए। उनको लगता है IR, CR, DR, बट ये दोनों एक कंपोनेंट है, दैट इज RMM। उन्होंने ये करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चन में भी पढ़ के रखा है। यूजुअली स्टैंडर्ड्स RMM को जस्टिफाई करता है, सेपरेटली IR और CR को नहीं। समझ में आता है? नहीं, कौन से दो कंपोनेंट्स, ठीक है, और RMM के लिए 2 कंपोनेंट्स हैं यहाँ। कौन से IR और CR, ठीक है। ऑडिट रिस्क के भी 2 कंपोनेंट्स हैं, RMM इंटू DR। नेक्स्ट, yes, Pawan, yes, controls can be related to an assertion directly, indirectly, directly or indirectly, none of the above. प्रिया ने आंसर दे दिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। लावी ने भी आंसर दिया है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। जरा सोच समझ करके बच्चों जस्ट थिंक कि व्हाट आर वी आंसरिंग, किसके बीच क्यों है, वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट। कंट्रोल्स कैन बी रिलेटेड टू एन असर्शन, आखिर रिश्ता क्या है इनका? यस, डर डर करके लोगों का आंसर आ रहा है। शालिनी ने आंसर किया है A, बाकी ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ रहा है C, एंड द राइट आंसर इज, एक मिनट, क्वेश्चन कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 4 एंड द राइट आंसर इज C. It is either directly or it is either directly or indirectly. क्यों मैं आपको बताती हूँ, टोटली वेरीज। कभी डायरेक्टली भी हो सकता है, कभी इनडायरेक्टली भी हो सकता है। यू कैनॉट जस्टिफाई कि ऑलवेज डायरेक्टली होगा, यू कैनॉट जस्टिफाई ऑलवेज इनडायरेक्टली होगा, क्योंकि डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ असर्शन। और असर्शन तो बहुत सारे होते हैं ना, ERCB, OCSCC, अंडरस्टैंडेबिलिटी, रिलायबिलिटी, काफी कुछ होता है। सो यू कैनॉट स्टेट अ पर्टिकुलर रिलेशन। वेरी गुड बच्चा। नेक्स्ट, control activities, whether within IT or manual systems, have various objectives and are applicable at various organizational and functional level. Which of the following is an example of control activity? इनमें से कौन सा कंट्रोल एक्टिविटी है? कंप्यूटर जी आपसे ये पूछना चाहते हैं कि इनमें से कौन सा कंट्रोल एक्टिविटी है? भूषण का सबसे पहला जवाब आ चुका है। नीलम, यस, कंप्यूटर जी, ऑप्शन डी पे ताला लगाया जाए, एंड ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, ये सभी कुछ आपका कंट्रोल एक्टिविटी है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आप खुद ही पढ़िए और क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब आप मुझे खुद ही बताइए। ये सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज भी आता है। राइट राइट भूषण, वेरी नाइस। ये दोनों स्टेटमेंट में से मुझे ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है और कौन सा नहीं।
6 सी कह रहे हैं लोग, both are correct. Yes, and the right answer is both are correct. Next, components of risk of material misstatement at assertion levels are, ये हो चुका हमारा inherent risk and detection risk, inherent risk and control risk, inherent risk and control risk, IR into CR. Seven is B. बलराम जी अटके हुए हैं, एक ही मिनट. We will re-evaluate. बलराम जी अटके हुए हैं क्वेश्चन नंबर 6 में. क्वेश्चन नंबर 6 सही बताया है बलराम जी. How come first statement is incorrect? Audit procedures consist of risk assessment procedures and other procedures. Absolutely. Audit procedures consist of risk assessment procedures and other procedures. बराबर बोला, क्या गलत है इसमें? याद है आपको हनुमान जी वाला एग्जाम्पल? रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स एंड अदर प्रोसीजर्स. एकदम ही सही जवाब है. यस, 7B. 8. क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8 को ना थोड़ा अलग पेज पे भी जा रहा है. Yes, question number 8. People, we'll complete this MCQs and then we'll wind up the class. ठीक है? Check. Because of the assessment of risk of material misstatement taken into accounts of internal control. अभी एकदम ही confusing statements हैं. चल बताओ. A, B, C, D. Don't forget to like the video, to subscribe to the channel. Don't tell me सब same जैसा लग रहा है. भूषण, नीलम, सूरज, शालिनी, लक्ष्मी, लाभी, वैभव, साक्षी. अनडाउटेडली ये मैंने मेरे टेस्ट में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है. ये आंसर डी इज अ करेक्ट आंसर. यस, लास्ट, सॉरी, 9th. Audit risk is a function of. लावी का सबसे पहला आंसर आ चुका है. It is a function of. Yes, इसमें तो कोई दोहरा ही नहीं है. It is a function of risk of material misstatement and detection risk. कई बार हम लोग ये कर लिया. Yes, question number 10 please. Risk of material misstatement may be defined as a risk that the financial statements will be materially misstated after audit. Financial statements are materially misstated during the audit, prior to the audit, or of the above. 10. वैभव का आंसर आ गया है 10 के लिए. वैभव कह रहा है 10C.
Yes, and the right answer is C. Yes, yes, yes. आज तो मजा आ गया सच में. क्या बात है, क्या बात. अब ये मजा हर रोज हर दिन आने वाला है. इससे भी कई गुना ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि वहां पे तो टाइम फिक्स्ड रहेगा, रैंकर्स का अलॉटमेंट रहेगा एंड इट विल बी अ जबरदस्त राउंड ऑफ एमसीक्यूज. ठीक है, बट हाँ इट विल बी फ्रॉम ऑल द चैप्टर्स. फिर मैं वहाँ पे सेग्रीगेट करके नहीं बैठाऊंगी क्योंकि बच्चों उन्होंने सब कुछ कवर कर दिया. अब तो दो चैप्टर्स का टेस्ट लेना बनता भी नहीं बॉस. ठीक है, तो चलो जुड़े हुए रहिएगा. देयर इज लॉट मोर प्लान्ड ऑन द वे. यस, ससेप्टिबिलिटी. द ससेप्टिबिलिटी ब्ला 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 कौन सा कंट्रोल आएगा बताओ. इनहेरेंट कंट्रोल्स. यस, कई बार बोल चुके भैया ये तो. 11B. किस बारे में बोल रही हो आप, कहाँ एमसीक्यू होने वाला है. शालिनी, आफ्टर बैंक ऑडिट वी विल बी स्टार्टिंग विद एमसीक्यू राउंड ओनली. तो यूट्यूब पे जो भी सेशन होंगे ना वो सिर्फ और सिर्फ आपके करेक्ट इनकरेक्ट और एमसीक्यूज होंगे. एंड दैट आल्सो विल बी अ मिंटी क्विज. एंड ये क्विज में वी विल बी, यही मैंने आपको कहा, दिस विल बी अ टारगेटेड सेशन फॉर योर 44 मार्क्स. फिर हमारी रेलगाड़ी चालू होगी फॉर हैविंग द ऑब्जेक्टिव्स गोल इन माइंड ऑफ 44 मार्क्स एमसीक्यूज एंड करेक्ट इनकरेक्ट क्वेश्चंस. ठीक है, कल क्या होने वाला है बच्चों, कल होने वाला है बैंक ऑडिट. बैंक ऑडिट बाय दिस वीक आपका खत्म हो जाएगा. सो एज कमिटेड, एज प्रॉमिस्ड, आई हैव डिलीवर्ड द क्रैश कोर्स बाय द फर्स्ट वीक. ठीक है, सो बाय दिस वीक हमारा बैंक ऑडिट भी खत्म हो जाना चाहिए. एवरी चैप्टर ऑलमोस्ट आर कंप्लीटेड फॉर योर क्रैश कोर्स इंक्लूडिंग योर. यहाँ पे चले जाइए. ये आज रिस्क असेसमेंट और इंटरनल कंट्रोल भी समाप्त होता है along with the question answers. ठीक है, सो कल हम करने वाले हैं बैंक ऑडिट. कल हम करने वाले हैं बैंक ऑडिट. ठीक है, तो ये सारे ही चैप्टर्स बच्चों हमारे कंप्लीट हो चुके हैं. क्रैश कोर्स की जर्नी जो उन्होंने 1 अक्टूबर को लॉन्च की थी, ये पूरी सीरीज अब जाकर के ये कंप्लीट होगी along with solving question answers, along with writing up test, and now we'll be focusing more on your MCQ questions. ठीक है, क्वेश्चंस आ सकते हैं. मैम एक रिक्वेस्ट थी, जब आप एमसीक्यू ले करेक्ट इनकरेक्ट कंपनी ऑडिट 2 का भी बता दीजिएगा. हाँ जी, ओके. आई गेस शालिनी इज फ्रॉम ओल्ड कोर्स. यस शालिनी, वी टेक केयर अबाउट योर कंपनी ऑडिट 2 एज वेल. यस, सो ये सारे सेशंस हो चुके हैं बच्चों. प्लीज डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन माय अनअकैडमी प्रोफाइल, to follow me on my Insta profile so that whenever we are uploading a new session you are quite updated. And हाँ जी बच्चों, मेरे स्पेशल क्लास में कॉम्प्लीमेंट्री वीडियोस पड़े हुए हैं. डू व्यू दैट, इट विल श्योरली हेल्प यू. आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि जो कंटेंट हमने कॉम्प्लीमेंट्री भी दे करके रखा है ना, इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. मैंने मतलब पर्सनली स्पीकिंग, मैंने कोई भी कंजूसाई नहीं की है ज्ञान बांटने में. कोई भी मतलब not even a single percentage I have holded myself back not to deliver it on a complimentary platform. So do watch my special videos, do watch my YouTube videos. I am sure you can crack this November 2020 examination with those videos also. So altogether, rounding it off, I have taken the main course over YouTube. I have also taken crash course over YouTube, which we started on 1st, will be ending by the end of the week. ये पूरा क्रैश कोर्स भी कंप्लीटेड है.
कॉम्प्लीमेंट्री चैप्टर्स के लिए जैसे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट हो गया, बैंक ऑडिट हो गया, ये सारे चैप्टर्स जैसे कि ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो गया, इसके लिए आप स्पेशल क्लास देखिए एंड बाकी उनके लिए यूट्यूब क्लास देखिए। एंड अगर ये सारी चीजें आपको सिस्टमैटिक प्लान वे में चाहिए तो ऑब्वियसली नन अदर देन प्लस बैच ज्वाइन कीजिए। एंड इसके लिए तो मैंने ऑलरेडी आपको बोल करके रखा है, डू अप्लाई माई कोड ऑडिट SAR and avail that 10% discount because you all know it very well. This is our way of giving you back. Okay, my dear friends, I hope you don't have any further queries now. Viper, within 3 days? Okay. So, chaliye, I will take up leave and we'll wind up the session now. You all keep studying, keep revising, be safe. I will see you all in my next class. Take care. Bye-bye.